Hello everyone, welcome to all in the series of real analysis. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है एंड रीमन इंटीग्रेबल क्या होता है एंड कुछ थ्योरम्स पढ़ी. आज के लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, एक दो डेफिनेशन करेंगे एंड देन क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. सो एक थ्योरम लिखिए सबसे पहले. F is Riemann integrable if and only if there exists a sequence of partitions such that limit n tends to infinity equals to 0. ठीक है. इसको प्रूफ भी करते हैं. Suppose that f is Riemann integrable then for each n belongs to n there exists a partition Pn such that u Pnf minus L Pnf is smaller than 1 upon n, because there exists a natural number n such that for epsilon greater than 0 1 upon n is smaller than epsilon. ठीक है. So this implies that u Pnf minus L Pnf tends to 0 as n tends to infinity. ठीक है. एक साइड तो प्रूफ हो गई. अब कन्वर्सली suppose that there exists a sequence of partition Pn such that limit n tends to infinity u Pnf minus L Pnf equals to 0. So now let epsilon is greater than 0, then there exists n naught belongs to n such that u Pnf minus L Pnf is smaller than epsilon for all n greater than equal to n naught. ठीक है. अब देखिए, u Pn naught f minus L Pn naught f is smaller than epsilon, and now let P epsilon equals to Pn naught, then u P epsilon
दिस implies that हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ी थी कि f is Riemann integrable if and only if there exists a partition P such that UPF minus LPF is smaller than epsilon. ठीक है, एंड ये एग्जिस्ट कर रहा है, so therefore f is Riemann integrable. नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स लिखिए. सपोज दैट f is Riemann integrable. Then for any sequence n of partitions with tends to 0, we have limit ठीक है. अब यहाँ इससे क्या मतलब है, ये है मैश ऑफ द पार्टीशन. दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ xi minus 1 where I is greater than equal to 1 smaller than equal to n. ठीक है. सो नेक्स्ट लिखिए. अब देखिए, ये कोई स्टेटमेंट है P that f is Riemann integrable. Then for any sequence Pn of partition such that mesh of the partition tends to 0, we have this. ठीक है. ठीक है, P कोई स्टेटमेंट है, वो इम्प्लाई कर रहा है कि Q स्टेटमेंट ट्रू है. देन अगर Q स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो वो इम्प्लाई क्या करेगा, P स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ठीक है, तो यही चीज़ हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखने वाले हैं. We suppose that there exists a sequence Pn of partition with mesh of the partition tends to 0 but limit n tends to infinitive UPNF not equals to limit n tends to infinitive LPNF. Then f is not Riemann integrable. Fine. तो अगर हम किसी फंक्शन के लिए कोई एक ऐसा पार्टीशन ढूंढ पा रहे हैं सच दैट लिमिट UPNF नॉट इक्वल टू लिमिट LPNF एंड विद मैश ऑफ द पार्टीशन टेंड्स टू 0, देन f इज नॉट Riemann इंटीग्रेबल. सो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन Riemann इंटीग्रेबल नहीं है, तो हम कोई ऐसे सीक्वेंस उसमें ढूंढ ले सच दैट मैश ऑफ द सीक्वेंसेस टेंड्स टू 0 बट लिमिट ऑफ UPNF नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ LPNF. देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि f इज नॉट Riemann इंटीग्रेबल. नेक्स्ट लिखिए मीन वैल्यू थ्योरम. So let f is a function from closed interval ab to R which is continuous
then there exists a point C belongs to A to B, close interval A to B, such that तो चलिए इसको प्रूव करते हैं. Let small m equals to minimum of fx and capital M equals to maximum of fx, where x is greater than equal to a and smaller than equal to b. ठीक है. Then small m b minus a is smaller than equal to integral of f, which is smaller than equal to m, capital M b minus a. This implies that m is smaller than equal to 1 upon b minus a. Integral of f over a to b is smaller than equal to capital M. Now, since f is continuous, so there exists C belongs to close interval a to b such that 1 upon b minus a integral of a to b f equals to f of c. Okay, because f is a continuous function. Then this implies that integral of f over a to b is equals to 1 upon b minus a f of c. ठीक है. तो प्रूफ हो गई है मीन वैल्यू थ्योरम. अब नेक्स्ट लिखिए फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम. So let f is a function from a close interval a b to r which is continuous and let phi x equals to a to x f, integral of f. Then phi is differentiable and second is that phi dash equals to f. अब लिखिए सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम. उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं. A function f is called antiderivative of f if f dash equals to f. ठीक है. तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए. सपोज दैट f is an antiderivative of a continuous function f,
then integral over a to b f equals to ठीक है. कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी. अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा तो ये ट्रू नहीं भी हो सकता. फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x² when x is not equal to 0, and when x equal to 0 will f0 equals to 0. ठीक है. इस फंक्शन के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो कंटिन्यूटी इज नेसेसरी. तो क्वेश्चन लिखिए एक, शो दैट द फंक्शन fx equals to x square is integrable on any interval 0 to k. So let be with the partition 0 k by n 2k by n and k by n. ठीक है. ये पार्टीशन है हमारा क्लोज इंटरवल 0 to k का. So let's see with partition of close interval 0 to k. Then take the xi equals to, क्या होगा, हर एक ये जो पार्टीशन है 0 to k by n, ये जो इंटरवल बनेंगे इनकी लेंथ क्या होगी, k by n होगी. इसको x0 ले लेते हैं. पार्टीशन है x0 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू k by n, एंड बीच में कहीं आएगा xi इक्वल्स टू I by n and so on, and this is equals to xn. ठीक है. n-1, सॉरी, n-1. ठीक है. तो डेल्टा xi इक्वल्स टू k अपॉन n फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन इक्वल टू n-1. ठीक है. then clearly the bounds of fx equals to x square in sub interval i-1 k by n to I k by n are ठीक है. क्योंकि जो ये कैपिटल एम आई है ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू i-1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू i, एंड स्मॉल एम आई इज इक्वल्स टू infimum ऑफ एफ एक्स such that x is greater than equal to i-1 and smaller than equal to i. And x square is increasing function when x is greater than 0. ठीक है. तो इसलिए जो कैपिटल एम आई है वो क्या हो गया, आई के अपॉन एन होल स्क्वायर, एंड स्मॉल एम आई क्या हो गया, i-1 k by n होल स्क्वायर. ठीक है.
सो LPF क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा xi mi is equals to m1 delta xi plus m2 delta x1 m2 delta x2 plus mn delta xn is equals to I minus 1 k by n whole square and delta xi क्या है, k by n. ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, I minus 1 whole square k cube by n cube is equals to k cube by n cube plus 1 plus 2 square plus 3 square plus n minus 1 whole square. ठीक है, it is equals to k cube by n cube. हमें पता है ये फॉर्मूला when I equals to 1 to n I square, it is equals to n plus 1 2n plus 1 by 6. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n minus 1 n and 2n minus 1 by 6. ठीक है, and it is equals to k cube by 6 n minus 1 n 2n minus 1 by 6. So it is equals to k cube by 6, यहाँ पर n क्यूब आएगा, फिर n क्यूब अगर हम कॉमन ले ले ऊपर से तो क्या बचेगा, 1 minus 1 upon n and 2 minus 1 upon n. ठीक है, by n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k क्यूब by 6 1 minus 1 upon n and 2 minus 1 upon n. ठीक है, ऐसे ही यूपीएफ निकाल लेंगे. k cube by n cube 1 square plus 2 square plus up to n square, and it is equals to n plus 1 2n plus 1 by 6 is equals to k cube by n 6 एंड ब्रैकेट में करके n क्यूब कॉमन ले ले अगर, जो क्या बचेगा, 1 upon n एंड 2 plus 1 upon n. ठीक है, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट, देन k क्यूब by 6 1 plus 1 upon n 2 plus
1/n, ठीक है। And limit n tends to infinitive UPF equals to limit k cube by 6 1 plus 1/n 2 plus 1/n k cube by 6 1 when n tends to infinity 1/n tends to 0 equals to k cube by 3, ठीक है। and limit n tends to infinity LPF equals to k cube by 6 1 minus 1/n 2 minus 1/n equals to लिमिट लगा दे when n tends to infinitive then 1/n tends to 0, so k cube by 6 1 2 equals to k cube by 3. So therefore there exists a partition P such that, so therefore limit n tends to infinitive LPF equals to limit n tends to infinitive UPF, and therefore f is Riemann integrable. फाइन। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। यहाँ पर रीमन इंटीग्रल हमारा पूरा होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। फाइन।